Wait for a second. I'm just checking the controls. Like, uh, is my screen visible to you all? Not sure. Yeah, I can see the OBS studio. And let's see. Are you all able to see my screen? First, we will note down the things that we are gonna do today. Like, I'm not sure you are able to see my screen. Okay, it's visible, right? So, what we are going to do today, I have made I will make a list now, okay? So we will be doing 5 coding problems that are given to me in my class. These are the problems 3, 4, and 5. We are going to do these 5 questions, and they are also new for me. And we will try to find the approach together to solve these problems. So uh, I will first make a to-do list. We will first do 5 coding questions. Yeah, that were given to me when I was in class. Okay, then we will be solving some lead code questions and one code step question. Why one? Because this is a question which was left to do. Okay, so we will be covering that question also. It's basically a contest question. Last Wednesday, level 3 question. If you have given the contest, you know about the question bishop moves. I actually did the question, but with the help of ChatGPT, I don't have that much time to solve that question on myself because I was busy in some other work. So we will be doing that stuff today only. So from now, we will have 2 tasks. Like these 5 questions, we will be try to solve it together. The 5 coding questions, I will be showing you the questions. And then we will solve some lead code questions and code step questions which are left to me. So just ignore this note. I have just made a to-do list which is not happening. I don't know why. So let's start with the questions. First, we'll be starting with the 28 question. I don't know what will be in there. Okay, if we face any problem, we will switch to ChatGPT. But if an earlier, we have tried and give our best. Okay, let's just read the problem together. 10 students are standing in a line in a random order, okay, but they're expected to be standing non-decreasing order. You are given an integer array. Okay, basically heights given है यहाँ पे इस array में. I will be speaking to all of you in Hindi plus English because I'm not that good in English, so I will be speaking in both. Okay. So, and students are standing in line in random order, but they are expected to be standing in non-decreasing order. Okay. They're expected to be standing non-decreasing order. You are given an array whose ith value represents the height of the student standing at the ith position. Find the count of the students who are not standing in the expected positions. Okay. बेसिकली ये जो हमारा ये दे रखा है बेसिकली हमारा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ascending order basically. So 150, 150, 175. So 150 is the one who is not standing at its correct position. Like 150 should be here in place of 175. And these all should be shifted uh, um forward. Okay, 150, 150. So the solution that first came to my mind, like we will create an extra array and we will put the sorted form of this array to that extra temporary array
And we will compare which will not match the position, and we will count it as one. Okay, 1, 2, 3, 4. How the output is 5? Let me just see. Let's see the explanation. The correct order should be 138. 130 is not at its correct position. 1. Okay. The original height is 150, but the expected height is 138. Position 1 and 2 both have 150. Match the expected height. So they are correctly placed at position 3. The original height is 190, but while expected height is 175. So the student is also misled. The position 5, the original height is 138, but the expected height is 190. The student makes misplaced as well. So let me just copy this. I will explain you while dry running it. We'll do a dry run. I just open my compiler. I will currently use this compiler because I don't know my VS Code will work or not. Okay, so this is not the expected order. The expected ascending order will be 130. We are total 3, 150, 150, 150, 150, fine. And 150, 150, and the next element should be 175 and then 190. So you can see there are how many elements and numbers which are mismatching their positions. 1, 2, 3, 4, 5. So answer will be clearly 5. So I know how to solve this question. Let's just comment this part and I will move this part. So we will first try the brute force. Okay. The one thing that first come to our mind is brute force only. I'm not that pro that human solution that directly will come into my mind. Okay. Import Java dot util. Okay, we have written this line. This includes all the libraries that are inside Java package. Okay, we don't need to import any other thing. This is enough because it, because it consists of all libraries, and we will be using scanner to take input. Scanner system dot in. Fine. What do we need in the question? As we can say, the and should be less than 100, height should be 100 to 200. Okay, we'll be needing a number of students and in the array consisting the height of students. So we will be in taking the input of number of students as a dot next int. Then I will be writing creating an empty array. Okay, we need to give some size over there, else it will give error. Now I will take input of the element. You don't know what's the default value of array if we don't initialize give any input to it. It is default 0. Okay. I less than n, I plus plus. We simply given a one line statement, so no need of curly braces. If you know Java, you know these things. Okay. So हमारी एक array input हो गई है. Okay. Now we will be making a temporary array. New int of same size. What we are going to do first, we are going to copy the original array in the temporary array. Okay, fine. We are going to copy the original array into the temporary array. Let's just move this part. So here my array is copied. Now we will use arrays dot sort function. It by default sorts the array in ascending order only. So we'll be not
change the original data. We will work on our temporary data. It's not always good to change the original data. We always used to work on the temporary data. Okay. Okay. Now we are going to. Okay, I already sorted. Now we're going to compare the elements. Again, I'll follow. If ARI is not equal to temp of I, fine. If ARI is not equal to temp of I, then we're going to use a count plus plus. We have not initialized the count variable, and we're going to initialize it. Simply just print. We will be printing the count value. We are then going to run the. I don't think so. There will be an error. I inputted this, made it this, then copied it, sorted it, and the one which does not match the position, we have counted them. Let's see if there is any error. Okay, there is no error. We will just first take an input of 5. Oh, sorry, 6. Then we will take 150, 150, 175, 150, 190, 150, and 138. 3, 4, 5, 6. We should get an output of 5. Let's see. Yeah, that means we are done with our first question. Let us confirm the algo by giving other test cases also. Like we have to give this one. Okay. And the output should be 0 because all are at its correct position. Let's just check this. They will give already a sorted array. Like 1, 2, 3, 4, 5. All are at its correct position. So we should get an output 0. Let's check. Okay, our code is working. This means we are done with our first problem. Let me just copy the code somewhere so that I can access it afterwards. Okay, I will be copying it here only. Okay, let's just jump to the next question. Question number 29. Okay, given an array of integers having n elements, the task is to print the array in the following order: smallest, largest, second smallest, second largest, third smallest, third largest, and so on. You will be finding these questions a bit easy or doable because these are just to practice your basic array skills. Okay, okay, I will try to speak a little bit in Hindi also right now. Okay, I will try. Okay, two lines of input. The first line contains the value of 10. The next line contains array elements in specific separated format. I think we have understood the problem. What's asking? Is 1584 in line foot we have to arrange the elements in such order like first smallest, largest, second smallest, second largest, third smallest, and third largest. We have to think a little bit what we have, which approval will fit here. Okay, what if I sort it? Will I just write it in my here, my compiler so that I can try it? Remove this part. 1584. 1584.
1584. We have to make it 1845. We have to make it 1845. Smallest, largest, second smallest, and second largest. Fine. What if we sort it 1485 and swap the position? Like this is the sorted one, this is input, and this is output. Okay. So we have to like make this input take into this output. We can see the pattern. Just observe the pattern. One, it as it at its correct only position. We have put the 4, 8. Okay, we have simply swapped the values after sorting it. What I can see from my eyes, like we have first sorted the array and we have used two pointer to sort the first and last element, second first and second last element. I think this approach will work here. Let me just comment it out. It's 1 5, swap it. 4 8, swap it. Let's just also try this approach and other in on other inputs also. Okay. 1 3 4 2 5. 1 3 4 2 5. Okay, I will type it by myself only. 1 3 4 2 5. According to approach 1, we will first sort it 1 2 3 4 5, and then we are going to swap the value, right? 1 in 5 is already sorted. We don't need to swap the boundary elements. They will be as it is. 2 in 4 will be 2, 4. 3 will remain there, and then 2, and then 2, then 5. This should be the answer according to me. Let's just check the output. 15243. 15243 is the answer. Okay. 15243. We are lacking somewhere. Okay. 15243 is not the right answer according to my algorithm. Okay, we have find the approach. It should be like first element after sorting the array, first, last, then second last, then mid. We can solve this question using two-point approach. I will try it.
Okay, I am here applying the two-pointer approach. Okay, this was not expected that it will work in one go. I have applied the two-pointer approach, like the first point which will work from here, and the last point which will work from the last element, and they will all will come closer to each other until they will match. Until unless they will meet. Fine. I think this code is working. This okay. So let's just try some another test case like 1, 2, 3, 4. We will take an input of 4 and add 1, 2, 3, 4. And the output should be 1, 4, 2, 3 now. Yeah, this is working. Okay, we will again copy this code and we'll save it here in a note. I will give a bit of space. We'll copy this one. Now we will start doing our next question, which is question number 30. What is asked here? Like the question level, I think are increasing. I think. Given array ARR having n integers, find the majority element. The majority element is element it appears more than n by 2 times. What is the meaning of floor? Basically, we have two things, floor or ceiling. Floor means the lowest value of n by 2. If the value comes 2.5, we will take 2 as the floor value. There is no majority element. Print no majority element.
Without quotes, you may assume that that is not empty. Okay. Find the okay, I am on a little break, but I was reading the question. So we have to solve this problem. Like we have to find an element
which comes for n by 2 times more. So we have to return that element, like just simply print that element. So we can see here 3, 4, 5, 6, 7 elements. 7 by 2 is 3.5. The element which comes more than 3.5 of floor value will be 3. Element which comes more than 3 times will be the majority element. Here we can see 2 is coming 4 times. So 2 will be our answer. I think I can do this question using hash map. So first we are going to implement an hash map. Okay, hash map of key integer and value integer with name a new hash map. I think okay, this and this. What we are going to do now, we will be writing an for loop, okay, and we will write am dot put ari comma m dot cat और default. बेसिकली ये सिंटैक्स याद होना चाहिए, मुझे भी काफी बार लिख के याद हुआ था, आपको भी हो ही जाएगा फिर. ओके, हम इस लाइन से पहले वी आर जस्ट putting our array values in our hash map. If ari wait am dot key am dot key value am dot key value becomes am dot key value of ari becomes greater than n by 2. By default, n by 2 will give an floor value because we have considered it as an integer value. Okay, the thing is greater than n by 2, then we have to just print and break our statement. Print a r ka I, and we will break because we no longer need any other element. If that break doesn't work, then we will be printing no. Okay, we will use a flag. Okay, okay, we will be using a flag because we have to also take care of the condition in which we will that no majority element. Okay, so int I int flag equal to 0. If the condition is met, we will get flag equal to 1. And if flag equal 1, we will break. If condition is never met, the flag will remain 0 and we can say that our no majority element is found. Okay, so we will just printing system.out println ar, oh wait, not ari, just simply no majority element found. Simple. Okay, what we have done here, like we have inputted taken input of an array and then we initialize and hash map and then we added the values and increase the frequency. I'm not sure of this syntax map dot key value. I want to check. I want to check the value of each key after each iteration. So I'm not sure of this syntax. So we will just confirm it by googling it. Am dot get value. Okay, I guess this is thing. Am dot get value. ARI greater than n by 2 and flag it. Okay, things will work. I'm not cannot find symbol M. Okay, there's something wrong here. Just confirm the syntax. I guess this is n by 2. M dot get value ARI. Okay, what's wrong? Correct.
the Java syntax for me. Okay, if I'm the get value, okay, simply get ARR of I. No need to write variable. Fine. I think now it will run. I think it's working. We will like get to 5. We will like 2, 2, 2, 2, and 1. So majority element will be and should be 2. We are getting 2 right. What if we write 5 and write 1, 2, 3, 4, 4? There is no majority element because no element comes more than twice. Okay, we are done with the third code in one go. I'm so impressed with myself. So good. Like, I know these are some easy questions, but still they are taking my skill test. Like how well I am in array, in hash maps, and how I can reach to the solution. We will be doing a third question number 34. Okay, we will read it together. Let me just check my mic. Okay, it's open. Give an array, integer array containing n integers. Find a contiguous non-empty subarray which has the largest sum and printed sum. हमें एक नॉन एम्प्टी सबअरे फाइंड करनी है जिसका लार्जेस्ट सम हो कंटिन्यूअस नॉन एम्प्टी सबअरे करने की तुम्हें ऐसे छोड़ छोड़ के नहीं तुम्हें लाइन से होनी चाहिए 2 1 3 it should not be like that 2 1 and then jumping on another element. It should be contiguous. Okay, I can use the prefix sum approach here. Like these are the questions which will help you recognize the patterns algos you have learned so far. Okay, so we are going to apply prefix sum logic. This I have not done it this question before, but practice makes you understand which pattern you can apply where. Okay. Okay. We will 2 1 3 4. I guess if we make an prefix sum array, make a prefix sum array, we have to give the largest sum. Okay. Here 4 1 2 1. This is giving the largest sum possible. So we will be giving the sum as an output only. Okay, we will first take an array as in we will copy this part because we have to make sure our code will work. We will try run by considering one single input. Okay, we will be writing this output and the output is 6 as an output. Fine. Okay. But we have to make, let me just check my voice. Sure, our code will work. We will try run by considering one single input. Okay, we will be writing this. I'm the only one watching my home screen. That's crazy. Output. But fine, never mind. I'm just here to learn. Okay, output. Okay, we will be same. We'll take an input of an array. Okay, what do you have to do? Let me just remember the algo prefix sum approach. Okay, it's what we have to. We will be putting the we will digging in temporary area again. Okay, I guess no. Okay, first start from basic. We will first write a loop. We will first write a loop and will be treating each position with its own sum and its previous element sum. Like our new array will be this updated array will be -2 plus 1 is -1 -3 -2 1 will be -5 plus 1 will be -4 and then -5 and 4 will be -1 and -1 will be 0 like this. Okay, we will like sort it out. Okay, who have to do this part? What we have to do? Sum is equal to AR of I and AR of I will put sum in AR of I because sum plus AR of I will be putting this
Okay, now we will just try to confirm our code is working right by where is my this should be a curly bracket here, right? One of class, one of main, and one of folder. Fine. I will just try to confirm everything is going right by rinsing my array after doing every single change so that I can map my changes. What I have done so far, like we have updated our element with the its sum of its own and its previous element. Okay, I think this code will work and we will figure out the next step. Okay, I have not commented it down. We'll just comment it down. We will comment this part down. We will try to run the code. Sum. Okay, I have not initialized sum. Let me just do this. So we will run it. Okay, we will write 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let's just take 5. -2, 1, -3, 4, 1, 2, 3, 4, and the fifth element. -2, -1, -4, 0, 1. Okay, our code is working till the logic we have made. Okay, now we have to find the largest sum possible. So we will be making a variable with name max, and we will be storing the minimum value it can store into the dot min value. What you have to do is max equal to max dot max AR of 9 with comma max. Fine. And we will be simply printing the maximum sum possible. Okay, should be max here. Okay, we will copy this input because it's too large. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, let's see. I will run it again. Integer. Okay, the spelling is wrong. It should be integer. Okay, I've done till here. Let's just check. We've been putting 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And I'll be writing the array -2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, and 4. The output should be 6. I guess I'm right. Output should be 6. Let's just check the output. What? Just copy this part. We'll paste it here. Answer is 2. It means I am doing something wrong here. I don't know why. Okay, let's just do this part. We have updated our array. We will sort that array and will print its last element because it will be its largest element. Okay, we will write 9. The input. Okay, I have to copy it again. ctrl+C, V, again 2. Heck, I'm not sure what I'm doing here. Okay, 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 fine. I know where I'm wrong. I think it's a variable sliding window question for me. Like prefix sum consider the elements of all its previous element, but if we check the output, here we are taking this much array only. It is not considering all the elements from its behind. I think in array, I need a sliding window approach.
ओके। ओके। देखो ऐसा होता है। अब समझ में आया, like we have to use some other approach to find a solution to the wrong one. We will be applying sliding approach now. Fine. Sliding window approach with two pointers, I guess this will work. Okay, we will be applying sliding window approach now. Let us again check my voice. Is it coming right? Right, five, right, one, slide some. Let me just do this. Wait a minute. Okay, we will write three, four, five, six, seven, eight, nine. Let's just take five. Right, one, slide some. If you guys are not like don't know what I am doing in this life, we are solving five DSA placement based questions which were given to me when in my last class. These are the five questions, and we are at our fourth question. After completing these five questions, we will jump to my pending lead code questions and the one code check question. हाँ, I just मैंने क्लॉक यहाँ रखी हुई है, मुझे लाइक क्यूट लग रही है काफी, लाइक गिविंग मी Pomodoro timer wise, so I have kept it here. Okay, will be for कहाँ थे हम लोग? We are trying to apply the sliding window approach here because the prefix sum approach failed drastically. Like we're not able to get a single output right. Fine. So let me just think if I can do it or not using the sliding window approach. We will try the question doing sliding window approach. We will shrink as our okay. I have learned. I have read somewhere like sliding window approach is not good for the arrays which contain negative numbers also, because we have to use sliding window when and only our sum gets increased by increasing the window and decrease by shrinking the window. So I think sliding window is not also the right approach for this question. Okay, now I'm confused. What should I do? Like two pointers here also. I'm confused. What should I do right now? Sliding window approach will not work here. The prefix sum approach will not work here. And I have not learned other approaches. I have just know wow, two pointer, sliding window, prefix sum, hash map. I think I need to figure it out on myself. Should I Google it or try it on my own? Okay. What should I do? What should I do? Like so much confused by क्या लगा सकती हूँ मैं इस पे लाइक कि मुझे उस सब एरे का सम मिल जाए जिससे मुझे मैक्सिमम सम मिल जाए। आई नीड दैट पार्ट ऑफ
that array. Contiguous. Is not able to think. What if I apply two pointer approach? Times 2, 1, and 3. Okay. What if I sort this array? Okay, then we will be losing our positions of the elements and there will be no sense of using sorting here. Like, देख रहे मतलब कैसे अप्रोच तक पहुंचा जाए सोल्यूशन इक्वेशन के सोल्यूशन तक। मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई की, वो यहाँ वर्क नहीं कर रही हैं। आई गेस कर भी रही हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि कैसे वर्क करेंगी वो चीज़ें। I guess I should try something else. Okay, we will try sliding window. Okay, we will see afterward it will work or not. Basically, try sliding window with 2 pointers. It will be our right pointer, and then we will do sum equal to sum of clear of I. Where do we have to shrink the picture? No clue. Literally no clue. Like मुझे कुछ इजी लग समझ में आ रहा, लाइक ये तो हो ही जाएगा ऐसा लग रहा है, बट हो नहीं रहा है। इफ इट नॉट दिस वन, आई थिंक ये भी हो गया था। हाँ, इस पे थे हम लोग। सीधा सीधा क्वेश्चन, एक एरे सब एरे का पार्ट निकाले, इसका लार्जेस्ट सम हो तो प्रिंट कर देना है। इतनी सी तो बात है उसमें। लाइक आई थिंक ज्यादा दिमाग लगा रही हूँ, इतना दिमाग लगना नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके, -1, -2, 1, -3, 4, -1, 2, 1 बाई। इसमें ज्यादा दिमाग लगना नहीं है इसमें। It can be shown that no subarray has higher submerits volume. Okay. So much confused by 1, 3, 4. क्या अप्रोच लग सकती है भाई? So much confused भाई। सम हो गया। This is our input. अगर पेन पेपर भी करके देखते हैं, लाइक हो सकता है लिख के भी दिमाग में आंसर आ जाए कि क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारा काम है भाई आज मुझे। ये 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसको मैं फोर्थ क्वेश्चन तो आई गेस। हाँ, एक क्वेश्चन और है। माय गॉड, एक क्वेश्चन और है उसके बाद। उसके बाद हमें लीड करो कोर्स शेफ का काम निपटाना, थोड़े बहुत ये क्वेश्चन रह गए थे। एंड उसके बाद मुझे आज में एसक्यूएल का वन शॉट कंप्लीट करना है, अपना कॉलेज की एक वन शॉट है उससे। 7:46 हो चुका है। 7th of August आज डेट है। Oh God, how will I be able to do this much of work in a single day?
ये वाला जो डे है, तो ये काम तो अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो नहीं हो सकता ये भी बाद में करेंगे, लेकिन कल से वही वाला काम, तो आज का टास्क तो यही है। लाइक लीड कोड की स्ट्रिक भी पूरी हो जाएगी मेरी, ताकि लीड कोड की प्रोफाइल आपको दिखा सकती हूँ, इसमें तो कुछ है नहीं। I'll be showing you my lead code file now. मतलब मैं बेसिकली बैजेस के लिए कर रही हूँ, मुझे लग रहा है, तो एक स्टैवर शीट भी कंप्लीट करनी है। उससे पहले कुछ एल्गोस कंप्लीट करनी थी मुझे, देन आई विल कंटिन्यू माय स्टैवर शीट। एक्चुअली आई वाज इन द स्टार्टिंग, द सॉर्टिंग पार्ट। ये क्वेश्चन मैंने किए तो हैं, बट लाइक मैंने इसमें काफी हेल्प ली, तो मुझे इन सबको ड्राइव करके फिर से समझना है। Like from sub-array, three-sum, count, valid prefixes, container with most water. Okay. I need 200 badge also, so that I can put that post on my LinkedIn. And let me show you my code sheet profile also. Like both are very big at a very beginner level. Like very beginner level. Like मुझे दिखाने का मन तो नहीं था, बट देख लीजिए। मैंने बहुत कॉन्टेस्ट दिए हैं, मतलब तो शुरुआत से दी थी, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी। इतनी कॉन्टेस्ट के बाद भी मेरी रेटिंग कुछ खास नहीं है। It's 1257. I want to make it 1400 as soon as possible. Okay. We will be DSA rating. कोर्स का कॉन्टेस्ट मैंने आज तक नहीं दिया है। इसका दिया था, पर अभी तक इसके कॉन्टेस्ट की रेटिंग ही नहीं चढ़ी है। I don't know why. Why it's showing 0/4? भाई मैंने कॉन्टेस्ट दिया था, इसका शो क्यों नहीं हो रहा है? एक तो एक गलती से हुआ था, मुझे पता नहीं था, रजिस्टर भी करने के बाद अनरजिस्टर भी करना होता है, तो मेरी रेटिंग उड़ गई थी। लाइक 1427 से 1368 हो गई थी। फिर मैंने कॉन्टेस्ट दिया है अभी, देख लीजिए 1 अगस्त को ही, बट स्टिल मेरी रेटिंग उतनी ही है और 0/4 दिखाया, जबकि मैंने एक क्वेश्चन और किया था। आई डोंट नो व्हाट इट इज। नहीं समझ आ रहा भाई, कैसे सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम? मतलब क्या करूँ ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाए? क्वेश्चन तो हम सब समझ गए होंगे, इतना मतलब कुछ बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं है, बस हमें मैक्सिमम सम निकालना है। सब एरे कितनी बड़ी सब एरे, बस उसका सम मैक्सिमम होना चाहिए, तो प्रिंट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 4 - 1 2 1 को हम ले रहे हैं, तो 6 सम आया जो कि मैक्सिमम है। हाँ मैं कंफ्यूज भाई, क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हैं कि हमारा सब एरे का सम निकल आए? फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अप्रोच अगर नहीं आ रही है, बहुत ट्राई करने के बाद भी हम देख सकते हैं यार, चैट जीपीटी से कोई बात नहीं है, थोड़ी हेल्प तो ले ही सकते हैं ना। सही कह रही हूँ ना मैं? थोड़ा तो हम जा सकते हैं। अगर चैट जीपीटी नहीं, भले हम वी कैन टेक सम हेल्प ऑफ गूगल। कोई कोर्स है लीड कोड में, तो टाइम है हमें आने पे। ओके, थोड़ी हेल्प तो ली जा सकती है। ओके, आई विल सेंड this screenshot to go to my chat GPT. Can I apply prefixum? नहीं, should I apply? देखो मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरी बहुत गलतियां निकलेंगी जो मैं बातें कर रही हूँगी। Okay, so I'm just trying. I'm also learning like you all.
शुड अप्लाई प्रीफिक्स सम और स्लाइडिंग विंडो, वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। इसमें से मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ, क्या ये सही अप्रोच है, ये मैं जानना चाहती हूँ। Because I think I should use can I apply here. Like kind of no, this is one of those problems. This sliding window does not work because array contains negative numbers. भाई मैंने बोली थी ये बात, मैंने ये बात पढ़ी थी कहीं पे तो बोली भी थी और बात सही भी क्योंकि भाई विंडो का एक फंडा है कि विंडो जब तुम इंक्रीज एक्सपेंड करो तो सम हमेशा बढ़ना चाहिए और श्रिंक करने पे सम हमेशा घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो विंडो एक्सपेंड करने पे हमारा सम घट भी सकता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो हियर. Yes, you can use prefix sum but not by themselves. कडाने, ओके कडाने की थी भाई ये, मतलब मैंने एक दो अप्रोच में सोचा पढ़ के रखूंगी, इसमें तो कडाने है जो छोड़ रखी है मैंने, यहाँ कडाने ही लग रही है. सब अरे सब यानी कि कडाने लगनी है भाई, तो मतलब हमेशा का ही है, ये नाम आ जाए वहाँ कडाने ही लगती है. ओके वी विल ट्राई टू ग्रैब कडाने टुडे ओनली, इट विल बी द बेस्ट अप्रोच. ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं हम लोग. ओके वी विल लर्न brute force first. Like we will just see brute force and we will implement optimal only. Okay, give me brute and optimal. And wait, not kadane, both solutions. दिमाग में क्यों नहीं आया, मतलब मैं सीधा एल्गोस में जंप करने लगती हूँ विदाउट इवन ट्राइंग द ब्रूट फोर्स. कडाने एल्गोरिथम. Okay, I need kadane generalized template. ओके विद दैट डीपी फॉर्म, मैं अभी डीपी नहीं करना चाह रही क्योंकि मुझे आती ही नहीं है. आई विल बी जस्ट वर्किंग ऑन algos only. Okay, I want to take a break but I will take the break only after doing the 5 question. I will take break after this question and next question. Okay, fine. Generalized Cardano template. Like I will be doing 2 to 3 streams. I want to, like कितनी देर हो गई स्ट्रीम करते हुए. I really want to see the time. But it feels like I'm talking since so long. Reload क्यों नहीं हो रहा है भाई? बस 1 घंटा हो रहा है मुझे काम करते हुए. और it feels like I'm studying since hours. Okay, now I will be trying the Kadani brute force first. Like brute force देखते ही समझ आ रही क्या हो रहा है इसमें. हम ये तो Kadani I guess. brute कहाँ है? मेरी brute. ये रही brute force. हम सारी सब एरर को चेक कर रहे हैं, फिर हम फ्रंट को शिफ्ट कर रहे हैं. ओके
पहले हम 0 से लेके एंड तक की पूरी सब एरे चेक कर रहे हैं, देन 1 से एंड की, देन 3 से एंड की, देन 4 से, -1, देन 2 से, फिर हम बार बार मैक्सिमम को स्टोर करते जा रहे हैं। क्या भाई, इतना आसान अप्रोच क्यों नहीं आया? नम्स नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरी एरे का नाम, एरे मेरी ARR से है ब्रो, इट इज नॉट नम्स। 9 will copy the input, let's tell me answer is 6. Okay, we are done with the brute force. Really, चैट जीपीटी ने हेल्प की है बट स्टिल समझा हमने कैसे हो रहा है काम। हम बेसिकली फ्रंट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, पहले पूरे का सब निकाला, फिर फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट तक, फिर सेकंड से लास्ट एलिमेंट तक, और हर एक सब एरे का हम सम स्टोर करते जा रहे हैं मैक्सिमम वाला। ठीक है, अब इसमें कड़ाने अप्रोच कैसे लगेगी वो हम देखते हैं। ठीक है, ये OM n² में हुआ, सही बात है, नेस्टेड लूप है विद n and n, so our time complexity will be n²। कड़ाने वाली अप्रोच पढ़ते हैं फिर हम लोग। keep extending the current subarray. If the current sum becomes negative, start it, because negative sum can only hurt future subarrays. What an explanation, bro. कोई भी सम नेगेटिव हो उसको डिस्कार्ड करो तभी के तभी, क्योंकि वही वो हमारे सम को कम ही करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या अप्रोच रखी है, करंट सम 0 है, मैक्सिमम सम में मिनिमम वैल्यू डाल दी so that we can compare it with any other value, even -1 will be greater because we have kept the minimum value possible। करंट सम यहाँ पे हमारा जैसे कि ठीक है, उसको मैक्स मान लेंगे, फिर करंट सम अगर 0 से कम है तो करंट सम को 0 कर दो। मुझे समझ नहीं आया ये हमारे सॉल्व कैसे करेगा प्रॉब्लम। ठीक है, ड्राई रन देखते हैं। -2, करंट सम -2, मैक्स सम -2, 0 कर दो क्योंकि वो नेगेटिव बैठ रहा है हमारा। नाउ वी विल ट्राई। अब हमारा -3 1 आया जो कि 0 नहीं कर रहा, तो हम रिसेट नहीं करेंगे, हमारा मैक्सिमम सम 1 रहेगा। Then we will taking -3, current sum -2, maximum sum 1 है तो 0 रखेंगे। तो हमें पता है हमारा मैक्सिमम सम पॉजिटिव ही रहना है, तो कुछ तो गलत है ना। लाइक अगर पूरी नेगेटिव एरे की हमारी एरे हुई, this code will not work। What if our array consists of only negative element? ये भी तो हो सकता है, लाइक वहाँ पे हम टेस्ट केस के चेक करें, सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट में से, या सी इसमें सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट है तो ये कोड तो वर्क करेगा ही नहीं फिर। बट ये इसका आंसर ये देंगे, इन्होंने सोल्यूशन दिया है, इसका आंसर यही बताएंगे ये बात ठीक है या नहीं। क्या बोला इसने? Excellent question. It's the most common ACCENTURE Kadane algorithm. Use this version. It still works for array containing only negative number because you update max sum before resetting current sum। ठीक है, 0 -2 -2। ओके, हम अपना मैक्स सम स्टोर करने के पहले रिसेट, बिकॉज यू अपडेट मैक्स सम बिफोर रीसेटिंग करेंट सम, हम मैक्स सम को रीसेट करने से पहले स्टोर कर ले रहे हैं, तो ऑल ऑल नेगेटिव वाला भी कंडीशन वर्क कर जाएगी। ओके, आई थिंक दिस इज genius। I will comment out this part because I don't want to lose my brute force solution। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, इसको कमेंट नहीं करते, इसको नीड है हमें इसमें भी।
हम एक करेंट सम लेंगे। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे कडाने की एल्गो पढ़ रहे हैं। कडाने कडाने एल्गो। ओके, फिर तो फिर हम एक लूप लगाते हैं। हम करेंट सम में डालेंगे ए आर ऑफ आई। फिर हम एक मैक्सिमम वेरिएबल लेंगे, उससे हम डालेंगे मैथ डॉट मैक्स मैक्सिमम कॉमा करेंट सम। और अगर हमारा करेंट सम लेस देन 0 हुआ तो हम अपने करेंट सम को 0 कर देंगे, क्योंकि कोई सेंस नहीं है ना, वो आपके सब प्रोडक्ट मैक्सिमम सम को घटा ही रहा है। फिर एंड में हम आई गेस मैं इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकती हूँ, वेस्ट टाइम, प्रिंट कर देंगे। मुझे ऐसा लॉजिक याद आ रहा है, मुझे याद नहीं क्या। नॉट अ स्टेटमेंट क्या है? हम करेंट सम को मुझे इनिशियलाइज करना था, ठीक है। कैन नॉट फाइंड सिंबल मैक्सिमम, ओके भाई, कैपिटल है। ओके, इट मीन्स चल गया है, कुछ नहीं आ रहा है तो, मैंने कोई कमेंट तो दिया ही नहीं है ना। let's just copy this input, we should get 6 4 आया है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मुझे भी नहीं पता। करंट सम में ऐड करना है मेरे ख्याल से, हमें करंट सम में यार का ऐड करना है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पता नहीं। 9, हाँ आई वाज राइट। करंट सम में ऐड करना था आई, क्योंकि हमें सब एरर चाहिए ना कि एलिमेंट मैक्सिमम नहीं निकालना है, क्योंकि इससे तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट निकाल के दे दी जैसे 4। फिर हमें सम चाहिए तो हमें करंट सम से ऐड करना पड़ेगा, ये हमारी कडाने अप्रोच है। ओके, वी विल बी कॉपिंग दिस सॉल्यूशन। ओके, जस्ट चेक कर लेते हैं नेगेटिव के लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा। वी विल कॉपी दिस इनपुट, कॉपी हो जाओ। फिर PLC अगेन रन करेंगे, 7 लिखेंगे, माइनस को इनपुट लिखेंगे, -2 आंसर आ रहा है क्या? -2 आंसर है, यस। तो ये सोल्यूशन बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रहा है। कडाने अप्रोच हमने समझ लिए कैसे होती है। वी विल जस्ट भाई, पीछे से डिस्टरबेंस आनी ही है क्योंकि घर पे हूँ मैं, तो इससे इग्नोर करना, ठीक है। हाँ, तो मैं इस सोल्यूशन को कॉपी करके अपना यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, पेस्ट। Now we will be doing our last question number 35. Okay, we are so close to our break. We will be taking a little break after these 5 questions. You can also take rest. Okay, we will just read this question. The question says, Nanny house. A child is planning to visit his nanny's house during the upcoming summer vacation. He owns 10 toys and wants to take some of them along. However, he can carry a maximum weight of 5 kg and that is 5,000 grams. उसके पास एलिमेंट ith वेट को आप ith टॉय बता रहा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज ही कैन कैरी विदाउट एक्सीडिंग द वेट लिमिट, ठीक है। अब वेट लिमिट कितनी है? 5 kg। अगर हम इनपुट ग्राम में दिया तो हम 5,000 कंसिडर करके चलेंगे। सो अगर हमने सॉर्ट कर लिया 200 1200 1500
5 रहना बहुत मुझे चाहिए, तो आई थिंक सॉर्ट कर लें। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सॉर्ट करके लास्ट स्टार्टिंग एलिमेंट, उसने एलिमेंट का सम 5,000 तक बैठे या उनसे ज़्यादा ना बैठे, उनसे कम हो सकता है, आउटपुट 5 आ जाए। ओके, आई थिंक इस क्वेश्चन को भी हम कढ़ाने से कर सकते हैं। I know I can apply brute force here, but कढ़ाने something we can apply again. मैक्सिमम सब इसमें कंडीशन जैसे हमारी थी, जैसी हमारा सॉर्ट करके काम हो जाएगा अलग से। ओके चलो ब्रूट फोर्स बनाते हैं पहले। एक एरे इनपुट लेनी है, इसमें मैक्स की नीड नहीं है हमें। रिमूविंग दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ये इनपुट हटा देते हैं, नया इनपुट कॉपी करते हैं हम लोग। ये हमारे लाइक सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगा था लास्ट क्वेश्चन और टफ हो जाएगा, बट सर ने हमें ऐसे ही क्वेश्चन दिया है। इसका आउटपुट क्या था? 5 ना? यप। So will comment out this part। यार लास्ट में कुछ हो जाता है कर्सर, ठीक है। ओके, अब हम एक फॉर लूप तो मतलब हर क्वेश्चन में लगना ही लगना है until unless you are doing DP और recursion। ओके, अगर मैंने इस एरे को सॉर्ट कर लिया, ठीक है, if sum is greater than 5,000 हो जाए तो ब्रेक कर दो, वरना सम में हम ए ऑफ आई डालते रहेंगे और काउंट प्लस प्लस करते रहेंगे। यहाँ पे हम एक काउंट वेरिएबल ले ले रहे हैं, ठीक है, सम वेरिएबल भी ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमें बस बेसिकली सम कितने वो टॉयज अपने नानी का ले जा सकता है, ये हमें इसका काउंट ही प्रिंट करना है, ठीक है। ये दिस नॉट कढ़ाने हैं को प्रीवियस क्वेश्चन में थी वो। we will run it 7, copy this input, so it will be 6 आंसर आ रहा है। इसका 6 आंसर आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ आ रही थी, 5 आंसर आना चाहिए ना। ओके, बाहर यूज कर रहे हैं इसे। अगर आंसर 6 हो ही था यार, इसका 5 है। फिर ड्राई रन करके देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो रही है। ड्राई रन करते हैं कहाँ गड़बड़ हो रही है। पहले हमारा इसको सॉर्टेड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। 200, 500, 800, 1200, 1500, 200, 500, 800, 1200, 1500, 1800, 4000। ओके, सॉर्टेड है। 700, इस कंडीशन को हमें पहले लिखना चाहिए। ऐड करने के बाद क्यों चेक कर पाए हम लोग, तो इस बार एक काउंट और आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे बात सही लग रही है।
अगर मैंने ये किया, अरे यार मैं कॉपी क्यों गलत कर लेती हूँ। ठीक है, सी। हाँ मैं ठीक थी। वो एक्चुअली कंडीशन चेक करने से पहले अपडेट तो करो सम की वैल्यू। अब तो अपडेट बाद में हुई तो एक कंडीशन चेक होकर काउंट प्लस प्लस तो हो ही जाना है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। इजी था आई नो, बट ठीक है। हमने 500 क्वेश्चन कर लिए हैं हमारे होमवर्क के। अब ये क्वेश्चंस तो होते रहेंगे। हमें बेसिकली इन क्वेश्चंस को करना है। सब एरे सम इक्वल्स के। लीड कोड का क्वेश्चन जैसे कि हमने अभी कडाने सीखी है, यहाँ कडाने ही लगनी है। ठीक है, कडाने का अगर टेम्पलेट रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हैं। हम्म, हम्म, recognize कडाने प्रॉब्लम। तो जहाँ भी मैक्सिमम सब एरे आ जाए तो वहाँ कडाने लगने ही है। मतलब आंख बंद करके कडाने के बारे में सोच लो। वन लाइन मेमोरी ट्रिक क्या है? either start a new sub-array or extend the previous one। ओके, ये पांचों तो हमारे हो गए हैं आज। इन्हें हटाते हैं और लीड कोड वाले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है मैक्सिमम सब एरे। ठीक है, ये हो रखा है। क्यों हो रखा है कि मैं तो किया नहीं है, कहीं क्लास में कराया हो। मैक्सिमम सब एरे, मैक्सिमम सॉरी 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 सब एरे सम इक्वल के है क्वेश्चन का नाम। सब एरे सम इक्वल ये भी हो रखा है, बट कोई बात नहीं, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कढ़ाई अप्रोच से ही हुआ होगा। हाँ। नो। नहीं। नहीं तो कढ़ाने से नहीं लग रहा मुझे। ओके वी आर, आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक। We will be continuing with our lead code and questions and our SQL one shot soon. Today only, before 8th of August or before the evening of 8th of August. I will be studying in the night or in the, you can say in the morning of 7th, oh, 8th of August.